everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं ITMC, दैट इज इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर क्लास की। अगर हम बात करते हैं तो क्लास हमारा 147 क्लास है। ऑलरेडी हमने 146 क्लासेस कर लिया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एनालॉजी को डिस्कस किया है, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया है, देन वी हैड डन सीरीज कंप्लीशन, देन वी हैड डन कोडिंग डिकोडिंग, then blood relation, then we had done sequential output tracing, logical Venn diagram, direction sense test, alphabet test, arithmetic reasoning, then we had test puzzle test, and then we had done your alphabet test as well, जो कि actually हो लिख चुके हैं, sorry, alphabet test, and then we had done your number ranking and time sequence test here. एंड उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है अभी लास्ट जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं उसके रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक एज वेल, अगर हम बात करते हैं तो मोर ओवर हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ योर 15th टॉपिक ऑफ द सेशन एज वेल। एंड जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो अरिथमेटिकल रीजनिंग किया है। लेट्स गो अहेड विद कि देखिए शायद कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम IT दैट इज़ ITMC कर रहे हैं, जो कि 15th टॉपिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देन 13 दो टॉपिक कोई छूट रहा है हमारा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो वी हैड डन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एज वेल, एंड देन व्हाट वी कैन से एज इन द फॉर्म ऑफ कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उसके रिस्पेक्ट में दो टॉपिक छूट गए हैं। लेट्स गो अहेड विद दिस। लाइक एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज कॉम्प्लीशन हो गया, कोडिंग कोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल टेस्ट भी हो गया, यस हो गया, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस डायग्राम हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, नंबर रैंकिंग, मैथमेटिकल ओके मैथमेटिकल ऑपरेशन एक टॉपिक बच गया था, और एंड द सेकेंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बच गया था। तो ये दो टॉपिक और हैं, बाकी हम जो कर रहे हैं वो 15th टॉपिक ऑलरेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। सो फॉर द सीक्वेंस ऑफ द 60th क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन हम ऑलरेडी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 60th क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स दैट वी हैव इज 51 11 61 64 30 32 35. This is the missing term, and this is 43. The options we have is 27 25 and 32 here. Let's go ahead and find it out. In the first row, if I'm seeing it, 5 मल्टीप्लाई अगर हम 1 करते हैं सो विल गेट 5, एंड 6 मल्टीप्लाई अगर हम 1 करते हैं तो विल गेट 6 या तो अगर 5 और 6 को प्लस करते हैं तो विल गेट हेयर इज 11. सो व्हाट विल डू हेयर इन द फर्स्ट रो वाइज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 5 हेयर जो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है, एंड 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर दिस विल गेट 6 हेयर। और अगर हम 5 और 6 इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 5 + 6 जो होता है वो 11 होता है, दैट व्हाट विल गेट इन द मिडिल हेयर। नेक्स्ट गो अहेड विद द सेकेंड रो, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा, फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उनको ऐड ऑन करेंगे, देखते हैं 30 आता है कि नहीं। For this 6 multiply 4 we'll get 24 here, and 3 multiply 2 that will get 6 here, so we'll add in on, and that is 24 plus 6 to 24 plus 6 30 होता है, and that will get the middle term. So हम इसलिए right path पे हैं, so we are following that path only. 3 और 5 35 and then 4 and 3 43, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 15, and then we will multiply the another one, that is 4 multiply 3 and then we'll get 12 here. तो 15 को अगर हम 12 में प्लस करेंगे so what we will get 5 plus 2 that is 7 here, and 1 plus 1 that is 2. 27 will be the right answer. Go ahead with the option 27 25 and 32, that is option A will be the right answer, that is 27 here. Moving ahead with another question, and that is question number 61th question of the session here. The series of the matrix we have is 72 24 6 96 16 12 108. Mid one will be the missing here, and this is 18. Options we have is 16 12 and 18 here. According to the question in the first row, if I'm talking about, so 72 को अगर we'll just add in on, and then we will add in on, and then after that we'll solve it out. But add in on से हमारे पास आंसर नहीं मिल रहा है तो विल जस्ट डिवाइड इट आउट, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 24/2. उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन विल डिवाइड इट ऑन दैट आल्सो. इन द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स व्हाट विल गेट इज 72 दैट इज डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये अब 2 1 2 2 12 24 होता है, तो दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 12, और 12 के टेबल में 72 है वो 6 टाइम आता है. You also know that is the answer will be the 6, and that it will get here. Now moving ahead with another number, that is your 90 here.
So we here for the second row we'll do the solution here. That will be the 96 जो कि 96 रहेगा. फिर then we will divide it by then 16 है तो 16 को 2 से divide करेंगे. 2 1 are 2, 2 8 is 16. So what we will in this last we will get 96 divided by 8. When we'll divide this 96 by 8, then we will know that 8 12s that is 96 है, 8 10 80 होता है. Then corresponding हमने 16 ऐड किया तो that will be the 12 here, and जो कि हमें यहाँ मिल रहा है. Next for the next we will be finding out here for the missing one, and that will be for the missing number that on third row we can let that number be x here. So we'll do that the same 108 and then divided by here. So here as 108 plus x by 2 equals to 18. When we are solving this, what we'll get here is that will be x by 2 equals to 108 upon 18, and then after that that is equals to 6 here, and that we can say that x equals to 12. X equals to 12 is the right answer. Option 16, 12 and 18, and that is option B will be the right answer, that is here 12 here. Moving ahead with another question, and that is your question number 62th question of the session here. And the question we have is, the series we have is 28 27 84 35 12 45, then question mark. This is the missing term that we have to find it out, 9. The options we have is 15 18 and 25. According to the particular question here, with respect to the first row अगर हम देखेंगे, so 28 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं एंड जो आंसर आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 20 here. और यू कैन से दैट 28 को हमने 7 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है. 28 7 के में आता है, यू ऑल्सो नो 7 1 7 7 4 28 4 5 20, तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पे. अब इसके बाद हम सेम फॉर द सेम प्रोसेस हम करेंगे, 84 को 12 से डिवाइड करेंगे एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड लेट्स सी कि 35 आता है कि नहीं. अगर आ रहा है तो वही सेम पैटर्न हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं. 84 divided by 12 and that is multiply by 5, and after cancelling out, अगर मैं इसको cancel it out करती हूँ, so what we'll get here is that what as an answer that we'll get here's your 12 on the 12 12 7s are 84 and 8 7 5s are, that will be the 35. So 35 will be the right answer, and that in the middle that will be it is 35. So सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. विल डू दैट 45 डिवाइडेड बाय 9, that is multiply by 5. तो 9 1s are 9, 9 5s are 45 here. Okay, and then 5 5s are क्या होता है, that is 25. So 5 5s are 25. The answer should be the 25 here in the missing term, and the options we have 15 18 and 25, that is option C will be the right answer, that is 25 here for the session. Now moving ahead with another question, and the question is your 63rd question of the session. The question is, this is the missing term here, 13 49 9 17 69 13 11 and 59. The options we have is 5 9 and 10 here. With regard of the question, if I'm talking about in the second row, if I'm going to consider about, क्योंकि first row में ही आपके missing term है, so first we'll go through with the second row and the third row and the what pattern it follows, and then we'll apply for the first row here. For the second row की अगर हम बात करते हैं, so you can just go ahead with 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसमें हम फिर 3 ऐड करते हैं और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, then we'll get 18 plus 51 and that will be equals to 69 here. Okay, according to this row, तो 9 को हमने पहले क्या किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 17 था, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया. So what we'll get, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया and 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, so we'll get 18 plus and that is 51, that is equals to 69. तो 69 हमें यहाँ पे मिल रहा है. With respect to that हम थर्ड रो के लिए भी यही कंसिडर करेंगे. थर्ड रो के इस लिए क्या होता है, where we can find it out for this 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, will multiply 2 and this multiply by 3 here. So 2 को हमने 13 से मल्टीप्लाई करा, फिर ऐड करेंगे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, and then what we'll get 13 2s that is 26 and 11 3s that is 33. So we'll just add it on 6 3 that is 9
एंड 3 2 5 59, तो 59 हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब है जो पैटर्न हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारे पास कंसिडर करेगा और यही पैटर्न हमारा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड रो एंड द थर्ड रो। नाउ विल फॉलो दिस सेम पैटर्न इन फॉर द फर्स्ट रो हेयर। सो व्हाट विल डू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मिसिंग है तो इसलिए इसको एक्सलेट कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू द 49 हेयर। So we will do that as your x multiply 2 and add, because this is an x, we'll let it out and then add 13 multiply 3 here and that will be equals to 49 here, as you can see here. Okay, for this first row that is we'll just multiply, तो हमें 2x मिलेगा, we'll get a 2x and then in plus and then we will get here is when we're considering out 3 that is 9 and that 39, 13 3 is a 39 here, that is equals to 49, 39 उधर जाएगा माइनस में जाएगा, so what we'll get 2x equals to 49 minus 39 and that is equals to 2x equals to 10 here. 2x equals to 10 मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 2 5 10, तो हमें x की वैल्यू जो है वो 5 मिलेगी यहाँ पे। So this is x equals to 5 here, that is 5 9 and 10, that is option A will be the right answer, that is 5 here for the answer here. Moving ahead with the 64th question here, and the sequence we have is 12 47 21 10 52 4 64. This is the missing term and this is 24. This question has been asked in the CBI question paper, and that the options we have is 83 40 and 62. According to the particular question here, with respect to that what we have to find it out, we can just go ahead 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं and that is equals to, अगर हम 21 को भी 4 से डिवाइड करेंगे and that is equals to 3. So what we'll get here is 7 में अगर हम 4 माइनस करते हैं we'll get the 3 as well. So in that row we will just do the solution here and that is your 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं and that is equals to 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, so we'll get the 3 here. For the second row 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, so we'll do that 10 में 5. So here 10 upon 5, with respect to that we'll just go ahead and 4 by 2 will divide it by this, so 4 upon 2 and then of course we'll get 2 on the 2 2 to the 4 and 5 as the 5 5 to the 10, so we'll get 2 as answer. Now moving ahead for the third row that we have for the missing here, 64 को हम divide करेंगे by 8 and 24 को हम 3 से divide करेंगे, so what we'll get 64 को हम 8 से divide करेंगे, 24 को अगर हम 3 से divide करेंगे, we'll get the same answer, that is your 8 and the missing number would be with respect to this is your 83 here. Okay, so now with respect to that just go ahead 3 here पे 47 and then we have 83 here and that will be the right answer with respect to that, because the missing number is your that 83 and the option is 83 40 and 62 and that is option A will be the right answer, that is 83 here. Moving ahead with another question, and that is the question number 65. The matrix we have is 11 6 8 17 12 and this is the missing number 24 34 19 25 34 19 and then of course we have 19 28 and 11, and this has been asked in the assistant grade question paper, as you know, and the options we have is 13 16 and 15 according to the matrix what they had given you. The first column की अगर हम बात करते हैं with respect to ahead here 17 में अगर हम 11 माइनस करेंगे, so what we will get here is जो हम 25 में 19 माइनस करेंगे, the same we will get here. So we can do ahead and this is for the first column 17 11 minus 11 and 25 minus 19 both are equal and that gives the 6 here as value. For the second column अगर हम बात करते हैं second column में भी when we are subtracting 12 minus 6 and 34 minus 28, that is 12 minus 6 and as well as 34 minus 28 will get your answer, that is 6 here. And for the third column हम third column में भी check करेंगे for the missing number, that is in the third column that will let that number will be the x here, and with reference to that we'll just do ahead x or minus 8 जो कि हम अभी तक करते हुए आए,
x minus 8, and that is equals to 19 minus 11, and that is also the same, and that we can just find it out. 19 में 11 गया, so of course that will be the value that is here. Moving ahead with the value, and that will give us the value as x equals to 16, because that it goes towards it, and then minus से उधर वो plus जाएगा, and that will get x equals to 16 here as an answer. So the answer will be the x equals to 16, and the options we have is 13, 16 and 15. That is option B will be the right answer, that is 16 here. Moving ahead with another question, and that is your question number 66th question of the session, and this matrix we have is 3 4 5 3 7 12 3, then the missing number that will let x here, and that is 22. This has been asked in the assistant grade question paper. If I'm talking about the options here, so this is 9, 11 and 10 here. According to the particular question, we have a 3 plus, अगर मैं बात करती हूँ 3, if I'm talking about with this regard of with the concept of if I'm talking about the number below, and that is 3, अगर हम 3 और 4 की बात करते हैं, एंड उसके बिलो में जब नंबर आएगा तो वो 4 और 7 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. So with regard of that, we have a 3 plus 4, that is the number below 4 is your 7 here. Okay, and that what will get the sum of here. And अगर हम 3 plus 4 करते हैं, and then the number below is of 5, that what we'll get here. Okay, and then after that, अगर मैं 3 plus 7 करती हूँ, and then after that 3 plus 7 and then plus 12, so above below the number below will be the 12 here, and that is your 22. So we'll add it on a number that missing number will be we having errors. We can just add on, we'll just write it out here. That is 3 plus we can say that 3 plus 4 जो है number below 4 equals to 7. Then we can say that 3 plus 4 plus 5, that is equals to number below 5 equals to 12. Then we can say that 3 plus 7 plus 12, so that is equals to number below 12, that is equals to 22. And then we go ahead and move with a missing number, then we'll get 3 plus 7, and that is equals to 10. So that 3 plus 7 will be the same, जो उसके below होगा वो आपका number same होता है, तो addition होगा 3 plus 7, that will be the 10, and the missing number will be the 10 here. So the options we have is 9, 11 and 10, and that is option C will be the right answer, that is 10 here as well. Moving ahead with another question, and that is your question number 67th question of the session here. Here we have a 67th question, that is 3 2 2 6 24 12 25 64 6 10, और ये missing number है, that is we let that number be x here. According to the question, option A is 8, 6 and 12. With regard of this question, if I'm talking about, so with the sequence of this, we'll just find the value here. For the first column, if I'm talking about, so where we have is 3, this is we get 6, and this is what we get is 12 here. When we do that and cube root उसका निकालूंगी, तो what we'll find it out is the form that will be here. You can just go ahead for the first column if I'm talking about. Cube root निकालते हैं, so what you will find it out, 3 multiply 6 multiply 12, then we'll get 216, that is of cube root, and that is equals to 6 here. Okay, for the second column की अगर हम बात करते हैं, for the second column here, that what we have is your cube root हम निकालेंगे, that is 2 multiply 20 multiply 25, ये तीनों का, and that is of under root हम निकालते हैं, तो that will be 1000, and cube root इसका निकाल रहे हैं, तो we'll get the answer 10 here, that what it will achieve here. Now the cube root for the third column, so we'll have 2 here multiply 4 multiply 64. So we'll do ahead, and then we will be finding out for that missing number, that is 512. 512 का cube root हम जब निकालेंगे, so what we'll get is your 8. So the answer would be the 8 as answer, and that is option A is your 8, and that is 6 and 12, and that is option A will be the right answer, that is 8 here. Now moving ahead with another question, and that is your question number next, that is your 68th question of the session here. And the question is 14971234 246, and this is the missing number as well. Moving ahead with the question, this has been asked in the assistant grade question paper. So the missing number we have to find it out, that is 49, 7,
then 16,8, and then 36,4 here. With respect to the question here, and with respect to the value, what we have to find it out, and according to the particular question, the number in the first row, or that form the series of that is 1 1 ka square, and then we have a 2 ka square, and then we have a 3 ka square. That what we will get here. Okay, and with the number missing in the first row की हम बात करते हैं with reference to that. So what we'll get, this is a missing term, sorry, so I had put it out here, but this will be the missing term here as well. So this is the missing term here, and then we have for the missing number for the first row, so will be the 4 का square, and that will be the 16 here. तो 4 का square जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 1 का square है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर होगा, दैट विल बी द 16 हियर. तो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो 16 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न व्हाट दे हैड गिवन यू. फॉर द नंबर इन द सेकेंड रो फॉर्म द सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 4, सिंपल 1 2 3 4 जा रहा है. And for the number of the third row, that form the sequence of 2 4 6, तो ये वाला 8 होना चाहिए. With regard of that, क्योंकि यहाँ पे सब में +2 हो रहा है, 2 में +2 किया तो 4 आया, 4 में +2 किया तो 6 आया, 6 में +2 करेंगे तो we'll get 8 here. Okay, so according to that pattern we will get the missing number will be in the third is that is 8, and that will get 16 and 8. So the option we have is 49 7, 16 8, and of course 36 4. So you can also go through with option B will be the right answer, that is 16,8 here. Now moving ahead with another question, and that is your question number 69, question of the session as well. The series we have is 7 9 21 27 here. So here we have 69th question of the session. The matrix we have 7 9 21 27, 4 2 36 18, 9 4 54, and this is the missing term that we have to find it out. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, and that is also an important paper if I'm talking about the competition wise. The options we have 36 18 and 24. With respect to that particular question, you go ahead with the row wise. So 7 multiply 3, then we'll get 21 here, and 9 multiply 3, then we'll get 27 here. तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, we'll get the these particular answers. So we, as you can write down in the row wise, 7 multiply 3, that will get 21, and 9 multiply 3, that is also you get 27 here. For the second column, same for the sake we'll do that. अब 4 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, we'll get 36, और हम 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमको 18 मिलता है. तो फॉर द सेम मल्टीप्लाई हियर, 7 4 9s are 36 here, and 2 9s are, that is 18 here. So that what we get here. ऐसे 9 के और 4 के साथ भी हम करेंगे. फॉर द मिसिंग टर्म वी कैन जस्ट लेट द टर्म, एंड थर्ड रो के लिए अगर हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट 54, एंड तो फिर ऑलरेडी क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे देखिए 9 9 से मल्टीप्लाई किया है. तो यहाँ पे हमने जो, अगर हमने 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 4 के साथ भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 9 जो होता है वो आपका 6 सा 54 होता है, और अगर मैं 4 6 की बात करती हूँ तो 4 6 24 होता है. तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है, दैट विल बी द 24 here, and as you can see the options 36 18 and 24, the option C will be the right answer, that is your 24 here. Now moving ahead with this, we have another question, that is your question number 70th question of the session, and the question we have is the matrix we have is A D H F I M H. This is the missing term that we have to find it out. N and R. Options we have is K N and O. With respect to the matrix here, for the letters, the letters in the second and the third row, if you can go through with, okay, second or third rows are the 5 steps ahead of those of first and the second row respectively. So the missing letters will be the 5 step ahead of F here.
तो बेसिकली इसकी बात करती हूँ तो ये 5 स्टेप्स आगे आ रहा है। तो जैसे ए की चेक करके बात करते हैं, अगर ए में हम बात करते हैं तो ए के बाद आता है बी, आता है सी, आता है फिर डी आता है और फिर ई आता है, फिर ये एफ, ये फिफ्थ टर्म आपका आ रहा है। तो ऐसे इसके बाद डी के बाद देखो, डी के बाद क्या आता है, आई, ई, एफ, जी, एच, आई, फिफ्थ टर्म ये भी आ रहा है, सबके बाद फिफ्थ टर्म आ रहा है। तो एफ के बाद फिफ्थ टर्म क्या होता है, एफ के बाद आता है दैट इज एफ, जी, एच, आई, जे एंड देन के। तो ये फिफ्थ स्टेप आ रहा है आपका के। तो आंसर वुड बी यहाँ पे मिसिंग जो होगा वो आपका के होगा, ऑप्शन के, एन एन ओ, एंड दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज के हियर. Now moving ahead with respect to that, we'll move ahead with the next question, that is your question number 71th question of the session here. Here we have 71th question, that is Z, this is the missing term, this is S, R, O, this is the missing term, as well as this missing term, and G and Z. तो तीनों में एक ना एक, हर एक रो की अगर हम बात करते हैं तो एक एक ना एक मिसिंग है, या फिर हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में भी बात करते हैं तो सब में एक ना एक मिसिंग है। दिस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन वाइज। द ऑप्शंस वी हैव डब्ल्यू जे के, डब्ल्यू के जे एंड के डब्ल्यू टी। विद रिगार्ड ऑफ द क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट के सीक्वेंस की बात की जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको परफॉर्म करेंगे, इसको ही हम आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। विद द लेटर्स इन द सेकेंड कॉलम की अगर हम बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड कॉलम्स की अगर हम बात करेंगे, in the three steps behind that of the first column, and the letters that is in the third column here, and that is the 4 steps behind that is in the second column, so that the missing term of the first row will be the steps behind the Z, and 3 steps behind the Z, that is your that is Y, X and W. So 3 steps behind, that is the first will be the W here. Okay, and the missing term will be in the second row, and that is the 4 step behind you, वो से 4 step behind होना चाहिए, and that is with respect to the O अगर हम बात करते हैं, that is your that is in respect to the J, K L M N, तो that is your K here for this, and this is for W of course, and for the missing letters that is in the third row will be the 3 steps ahead of G, ahead of G मतलब G से आगे होगा, that will be the behind, उसके बाद आ रहा है, and that is which is your J here. तो हमारे पास जो टर्म होगा that is W, K and J here. So W, J, K एंड एट डब्ल्यू के जे एंड डब्ल्यू के, अब देखो डब्ल्यू जे के और डब्ल्यू के जे में दोनों ही सेम ही लेटर्स है, बट सीक्वेंस जो आ रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे। पहले डब्ल्यू आ रहा है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में आपका के आ रहा है, फिर जे आ रहा है, तो डब्ल्यू के जे विल बी द राइट आंसर। ओके, नॉट यू कैन नॉट टेक दिस वन। अगर इसको कर लोगे, कुछ बच्चे कर भी देंगे क्योंकि वो देखेंगे सीधे फर्स्ट ऑप्शन एंड देखेंगे हाँ आ रहा है तो ठीक है, टिक कर दिया, बट वहाँ पे गलत हो जाएगा। कोई सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि दोनों सिमिलर्स आपके लेटर्स हैं विद अ कॉम्बिनेशन हियर। Now moving ahead with 72th question of the session, and the question we have is F, I, O, A, J, K and E, M, and this is the missing term. The options we have is P, B and R here. In the putting if we are telling that A equals to 1, अगर हम ये मानते हैं कि A जो है वो नंबर 1 पे आता है उस सीक्वेंस के पैटर्न के, अगर चले B equals to 2 आता है, और आपका Z जो है वो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो Z जो है वो 26 आता है। सो वी गेट द गिवन मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि यहाँ पे F दिया हुआ है, तो F किस नंबर पे आएगा, F आपका आएगा 6th नंबर पे। ओके, यू कैन राइट इट डाउन, आई विल जस्ट राइट इट डाउन इन ब्रैकेट हियर। सो ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, तो ये हमारा 6th नंबर पे आ रहा है। ए बी सी डी की आई की बात करती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो वी हैव 9th। एंड ओ की बात करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, सो विल गेट 15। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग जो बताया था, तो मैंने अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस किस नंबर पे कौन सा वाला आता है वो भी मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक बताई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट द आंसर। वहाँ पे ए जो ऑब्वियस सी बात है 1 नंबर पे आता है। जे के बारे में बात करते हैं, जे आपका आता है 10th नंबर पे, और के जो आता है वो आपका 11th नंबर पे आता है। ई जो है वो 5th नंबर पे आता है, दैट इज ए बी सी डी ई। एंड के की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड देन के 10th एंड 11th। मैं एम की बात करती हूँ तो A B C D E F G H I J K L J K एंड देन L 12 नंबर छोड़ के, एंड M इज इन 13th नंबर। अब ये फाइंड आउट करना है हमको, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकेंड कॉलम है इसके, और ये दोनों का हम सम करते हैं तो थर्ड कॉलम मिल रहा है। देखो 9 + 6 दैट इज 15, 10 + 1 दैट इज 11, एंड यहाँ पे 13 है और प्लस ये 5, सो हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है 6 में, अगर हम 9 प्लस करेंगे विल गेट 15, सो जो कि यहाँ पे मिल रहा है।
1 में अगर हम 10 प्लस करेंगे विल गेट 11, और इसके बारे में बात करते हैं तो 5 में हम 13 प्लस करेंगे विल गेट 18। तो 18th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आर 18th नंबर पे आता है आर, तो यहाँ पे जो मिसिंग कैरेक्टर है वो आपका आर होगा। ठीक है, तो जब आपको पैटर्न समझ में आ जाए तो आप सीधे नंबरिंग के वाइज भी कर सकते हो, तो उससे आपका थोड़ा ईजिली रह जाएगा। एंड आंसर विल बी द आर हेयर एंड पी वी एंड आर, एंड दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज आर हेयर. Moving ahead with another question, and that is the question number 73rd question of the session here. H, K, Q, C, G, O, E, J, N. This is the missing term that we have to find it out. Let be the X here. Options we have is T, P, and N. And according to the question here, what we'll do, अगर हम ये मान के चलते हैं कि A1 होता है, B2 होता है, और आपका Z जो है वो 26 होता है because of the English alphabet here. So we'll just naming it out, and with the number A B C D E F G H. H is in on 8th number position, and when talking about the K, so A B C D E F G H I J K L, K that is 11th number, 11th number में है. Okay, and that is Q की बात करते हैं तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Q that is on 17th number here. एंड इसके बाद बात करते हैं सी के बारे में, तो ए बी सी 3rd नंबर पे है. जी की बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, दैट इज ऑन 7th नंबर. ओ की बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, दैट इज ऑन 15th नंबर. ए बी सी डी ई, तो दिस इज ऑन 5th नंबर. जे की बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, दैट इज ऑन योर 10th नंबर. एंड इसकी मिसिंग की बात करते हैं. पहले तो पैटर्न देख लेते हैं क्या फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बात कर लेंगे कि क्या बन रहा है. ठीक है, तो अगर ये नंबर आपको थोड़ा क्लियर नहीं है तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर. मैं यहाँ पे आपकी थोड़ा सा मैट्रिक्स बना लेती हूँ, जिससे एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा क्या नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज वो थोड़ा सा बॉक्स छोटा हुआ है. This is the sequence you will get 8, 11, 17. This is 17, and this is 3, 7, and then this is 15, and this is 5, 10, and this is your question mark. That what we have to find out. Clearly अगर आप देखोगे तो सेकेंड कॉलम से, अगर ये सेकेंड कॉलम से अगर आप थर्ड कॉलम माइनस कर देते हो, है ना, ओके, विद रिगार्ड ऑफ दिस, तो सेकेंड कॉलम को अगर फर्स्ट कॉलम से माइनस कर देते हो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो थर्ड कॉलम में आप सेकेंड कॉलम जो माइनस करोगे वो आपको आंसर मिलेगा. लेट द मिसिंग लेटर ऑफ देन लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. सो व्हाट आई हैड टोल्ड यू, मैंने बोला है आपको कि क्लियरली आपको क्या करना है. दैट व्हाट यू हैव टू डू इज सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है, सेकेंड जो कॉलम है, मैं लिख दे रही हूँ इसीलिए कि जिसको प्रैक्टिस करना है, सो दे कैन डू दैट एज वेल. एंड फर्स्ट कॉलम से माइनस करेंगे, एंड उसको भी माइनस किससे करना है, थर्ड, सॉरी, दैट इज इक्वल्स टू थर्ड कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम. तो हम ये करने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या करने वाले हैं कि पहले तो हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस करेंगे, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, जब हम थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम से माइनस करेंगे. तो हम मिसिंग टर्म के लिए ही शुरू करते हैं इसको. तो व्हाट विल डू इज 2, यहाँ पे 10 है, 10 -1 और -5, सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर लिया. अब ये क्या इक्वल है, ये थर्ड कॉलम वाला n, तो n है, हमें पता नहीं है. ठीक है, एंड दैट इज दैट व्हाट ए बी से दैट कि यहाँ पे n है, n माइनस 10, 10 तो सेकेंड कॉलम, तो ये रहेगा. तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. लेट गो अहेड. या 10 में 5 गया, 5 बचेगा, 5 2 क्या होता है, 10 होता है. ठीक है, तो विल गेट अहेड या आपका 10 इक्वल्स टू n माइनस 10. ये माइनस से इधर जगह प्लस में चला जाएगा, तो जब ये इधर प्लस से चला जाएगा तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 20. तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो n इक्वल्स टू 20 आएगी. तो n इक्वल्स टू 20 आएगी. सो ऑप्शंस, लेट गो हैव इट ऑप्शंस यहाँ. एंड 20 है, तो 20 पे यहाँ पे क्योंकि नंबर्स दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे दिया है T P N N, तो T 20th नंबर पे कौन सा आता है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. तो 20th नंबर पे आता है T. तो द मिसिंग लेटर ऑफ दैट 20th letter which is T here. तो answer will be the option A, that is T here. Okay, तो इस तरह से हम इसको find out करेंगे. First you have to go through with the pattern, and then after that you have to solve that. 74th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दैट इज B G and that is N D J N R G N, and this is the missing term. इस क्वेश्चन की अगर बात करती हूँ तो ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
paper है, and that is also an important paper with respect to the competition as well. The options we have is U, W and V. With regard of this question अगर हम बात करते हैं, so the letters in the first row follow the sequence of +5 +7. अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, इसने +5 किया फिर +7 किया, देखो B के बाद आता है C D E F G, तो 5th नंबर पे ये आया, फिर H I J K L M N O, तो that is of the 7th number that we'll find it out and here. Okay, +7 पे हमें मिल रहा है, letters of the second row follows the sequences of +6 and +8. ये +5 और +7 का सीक्वेंस कर रहा है, ये +6 और +8 का कर रहा है कि D में +6 करोगे तो J मिलेगा, दैट इज EFGHIJ, तो J मिल रहा है, और J से हम अगर +8 करेंगे तो हमें R मिल रहा है, जैसे KLMNOPQR मिल रहा है। तो अब थर्ड रो में क्या होगा, +5 +7 वाला है, +6 +8 वाला हो गया, एंड फॉर द थर्ड रो द फर्स्ट लेटर दैट इज G moves 7 steps forward, and the second row में वो 9 steps forward letter N पे पहुंच गया. Okay, then after that for the missing letter we will be 9 steps ahead of 9, and से आपके 9 steps हमें आगे जाना है, तो 9 steps आगे जाएंगे तो what will get and O P Q R S T U and then V and then W, तो W will be the right answer for the sequence. या हमने +9 में +9 steps आगे बढ़ गए, so that is W here, that is your U, W and V, and that is option B will be the right answer, that is W here. Now moving ahead with another question, and that is your question number 75 question of the session here. Here we have 75th question of the session, that is PT, and this is the missing term O, Q, N, S, M, N, and that is R here. The options we have O, U, and L here. According to the particular question की अगर हम बात करते हैं, so starting from the M की अगर हम बात करेंगे, starting from M अगर हम इसके start करते हैं ना, you just we are talking about the M letter here. So starting from M, all the consecutive letters appears in the given matrix. Also starting from M, one can reach U as well, as you can see here, and but in the case of the matrix, what we will be finding out, and without leaving lifting the pen even once, you can go on through it. Okay, so here with this question, as I told you, starting from the M, all the consecutive letters are appearing in the given matrix. We are also starting from M. One can reach EU without leaving the pen even, once here. So you can just go through with M, M के बाद N, N के बाद O, फिर P, Q, then we have R, and then S, and then T, and then of course we will move. You can just go through M, N, O, P, Q, R, S, T, उसके बाद क्या आता है, U आता है. तो ऑलरेडी क्या मिलेगा, हमने पेन एक बार भी ड्रॉप नहीं किया, एंड विल गेट यू हियर. तो उस हिसाब से जो हमारा सीक्वेंस, जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, विद द सीक्वेंस हम बिना पेन उठाए अगर हम मूव भी कर रहे हैं, एम से एन, एन से ओ, ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, फिर एस, फिर टी और फिर यू जाएंगे, तो द आंसर विल बी द यू हियर. O, U and L, that is option B will be the right answer, that is U here. Now moving ahead with another question, and that is your question number 76th question of the session here, that is 7B, 5C, 6B, 3C, 9B, 19A, and then 15A, 17A, and then we have here is your, this is the missing term, that what we have to find it out. Okay, let's go ahead with the options here, that is your 10C, 12C and 16C according to the pattern what they had given you. You have to just verify that first. In each of the column, if out of the letters you can see that A है, B है, C है, A है, B है, C है, तो once at last A B C में से आ रहा है, यहाँ पे B है, यहाँ A है, तो इसका मतलब है C इस वाले में आना चाहिए, according if I'm talking about the letter here. Okay, with respect to that they had appears at least, these must be appeared once here, so long the diagonal sum of all the two numbers is equals to the third number, and what the missing number will be, we can just go ahead, and that is your 7 plus 9, and 7 plus 9 क्या होता है, that is
you also gone through with, and that is of 7 plus 9 जो होता है वो आपका 16 होता है, as you can see here. से diagonally अगर हम बात करते हैं तो 7 plus 9 जो होगा वो 16 होगा. तो जो number would be here for this sake is 16 and the letter will be the C. So the 16C will be the right answer. Let's go ahead with option 10C, 12C and 16C, and that is option C will be the right answer. That is 16C here. Moving ahead with the 77th question of the session, that is 4C, 2B, 3A, 20A, 8A. This is the missing term, 45B and 7C and 5A and 15B. The options we have is 10C, 12C and 13C. And according to the for a particular question, what we have to solve here is in each of the row, if I'm talking about, according to the row, and then out of the letters A, B, C, each of these must appears the ones in each of the column. The product and the first the three numbers is equals to the second number, and that missing number would be where we can gone through with कि यहाँ पे रो वाइज देखेंगे A B C आ रहा है, A and B है, यहाँ पे थर्ड टर्म तो ऑब्वियसली बात है C होना चाहिए, and for C A B C यहाँ पे भी आ रहा है. And let for the number what we are going to do is the summation, and that for that sake we will do for that sake the product of that the first and the third number जो होता है उसको product करेंगे, and then we will find out the second number. The first of second product को हम करेंगे, that is of 2 and 5. That is first number will be here is the first, that is 2, and this is here it is will be the 5. So 2 multiply 5, that will get way at 10, and the number missing is A हो गया, B हो गया, and that is C. So the answer would be the 10C here, and the options we have is 10C, 12C and 13C, and that is option A will be the right answer. That is 10C here. Now moving ahead with another question, and that is question number 78th question of the session here. And the matrix we have is that is Z4 X3 V9 A6 C2, and this is the missing term that what we have to find it out, T5 R4 and P15 here. And the options we have is E10 E12 and S10 here. According to the particular question, what we have to find it out is each of the row consists of the alternate letters, and thus the first row contained you can say that first row that contain the V X Z as well, and where we can say that so that the contain letters will be here is your P R T, and this is a V X and a Z here. And according to the pattern what they had followed is the missing letter would be A है, C है, B छोड़ के C है, तो D छोड़ के फिर E होना चाहिए. तो उस हिसाब से लेटर तो आपका E आ गया, and for that number in each of the column form the arithmetic series, and thus the first column contain that is 4 3 and 9 here. With respect to that, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो 4 6 और 5 contain कर रहा है, okay, and where 4 5 and 6 and the second column contain your 2 3 and 4 here, and for that sake the number third column will be formed in the series of 9, and that will be the 12 here. So 12A will be the right answer for the question here. E12 E10 E12 and S10, and that is E12 will be the right answer here for the sake question. Now moving ahead with another question, and that is the question number 79th question of the session here. 79th question of the session, that is 3C 27 D, and that is your 9E 7I 21K 3M 4D. This is the missing term, and that is 7J here. And this has been asked in the CBI question paper, and that what we have to answer is option A is 11E 48F and 28G here. With respect to the question, if I'm talking about with the sequence that what we'll get here is the letter in which in the first row, and from that series we have C, D and E here, and in the series of the consecutive letters in the letters in the second row form the series of I, K and M here, and that is for the alternate series of the alternate letters as well. Similarly, the letters of that third row will be formed of the series, that is D E F छोड़ के फिर G A H I छोड़ के then we have I, so this word will be the G here with a sequence, and the letters of the 3 steps ahead of the previous one, and so that the missing letter will be the G. Okay, with regard of that, अगर मैं इसमें ऑप्शन में देखती हूँ E N F N G, तो ऑब्वियसली बात है उस हिसाब से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा. अगर E G आपके एक से ज़्यादा में है तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो यू विल जस्ट फाइंड इट आउट कि कौन सा वाला लेटर्स है, तो दैट इज़ G. तो उससे तो पता चल रहा है 28G होगा, बट फॉर द सेक टू फाइंड आउट कि अगर G 2 जगह होगा तो आप किस तरह से उसको फिगर आउट करोगे. And also the number in the second column is equals to the product of that the number in the first and the third column. So the first and the third column के missing numbers
जो होंगे that will be, you will just do that 4 sevens and that is 4 sevens will be the 4 multiply 7, that is your 28 here. 7 3s are 21 होता है and 9 3s are 27, तो वो number sequence हो रहा है 7 4s, that is your 28 here. So 28 G will be the right answer, that is option C will be the right answer here for the question. Moving ahead with the 80th question of the session, the matrix we have BD 3CE 5 DF 15 and EG 2 FH 4 GI 8 and HJ 4 and IK 6 and ये missing number है आपका. Options we have JL 24 IJ 18 and JK 18 here. With respect to the question, the number in the third column की अगर हम बात करते हैं, in each of the row is obtained by the multiplying the numbers in the first and the second column in the same row. So that will get the in the first row will get a 5 3s are 15, 3 और 5 को multiply करेंगे 15 मिल रहा है. And okay, now with respect to the same row and second row में भी same हमारा जो pattern है वो follow हो रहा है. That will be the 2 multiply 4, that is 2 multiply 4, that is 18 here. Sorry, the 2 4s are 8 here. And the number of that we filled will be the 4, यहाँ पे 4 और 6 को multiply करेंगे. So we will get 4 6 that is your 24 here. 4 multiply 6, that is equals to 24. एंड ओनली दैट 24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 24 यहाँ पे इसमें है, इसमें 18 है, इसमें ये है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है 24, दैट इज JL 24 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए हियर. ओके, इस तरह से हम इसको आंसर को फिगर आउट करेंगे. नाउ मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 81th क्वेश्चन ऑफ द सेशन हियर. एंड द क्वेश्चन इज इन अ मैट्रिक्स गिवन बिलो द वैल्यूज ऑफ ABCR की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है. The question we have is 9, 8, 12, B, 10, 7 and 8, C, 11. This has been asked in the hotel management question paper. The options we have is A equals to 13, B equals to 11 and C equals to 9. B option is A equals to 9, B equals to 13, C equals to 11 and C option is A equals to 9, B equals to 11 and C equals to 13 and D option is A equals to 13, B equals to 9 and C equals to 11 here. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. With regard of the question, let's assume the pattern would be that is A B है. Okay, A B है and then we have a C here, and according to the pattern what the question is all about, and that हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमें जो पैटर्न मिल रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग क्या फिगर आउट कर रहे हैं और हम किस तरह से उसको फिगर आउट करके उसको आंसर कर सकते हैं. So here we'll just do that कि sum of the numbers in each of the rows is in and each column we have a 30 here. You can just go ahead. 9 की बात करते हैं, 9 plus 1 that is your 10 and 10 plus 12. अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो 9 plus 2 that is 11 and 11 plus 8 will get अगर मैं इसमें यहाँ पे ऐसी वैल्यूज असाइन करूँ कि जो पूरा हमें 30 देते हैं, 30 देते तो कैसे दे सकता है. यहाँ पे अगर 12 है, 12 में अगर हम 9 प्लस करते हैं तो 12 में 9 प्लस करेंगे 21 आएगा और 21 में 30 कंप्लीट करने के लिए इसका मतलब हमें A की वैल्यू 9 देनी पड़ेगी तब हमें ये मिलेगा. इसके अकॉर्डिंग 10 प्लस 17 और 17 है तो 17 में हम ऐसा क्या ऐड करें, प्लस 3 वो ऐड करेंगे 20 एंड देन 13, तो इस रो में मतलब हम 13 ऐड करें तो हमें ये मिल जाएगा. B इक्वल्स टू 13 ऐड करें, A इक्वल्स टू 9 ऐड करें. इक्वल की बात करते हैं 11 प्लस 8 18 आपका 19 हो गया. 19 में हम क्या ऐड करें, दैट इज 11. तो 11 इस रो में अगर हम C की जगह 11 पुट कर देते हैं तो विल गेट A इक्वल्स टू 9 हम पुट कर सकते हैं, B इक्वल्स टू 13 पुट कर सकते हैं एंड C इक्वल्स टू 11 पुट कर सकते हैं. अगर हम ये पुट करेंगे तो विल बी सेटिस्फाइंग द वैल्यू. तो A इक्वल्स टू 9, A इक्वल्स टू 13 है, A इक्वल्स टू 9 यहाँ पे, A इक्वल्स टू 9 यहाँ पे, A इक्वल्स टू 13 यहाँ पे. तो A इक्वल्स टू 13 वाला तो केस दोनों ही कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कोई एक होगा. अब B इक्वल्स टू 13 कहाँ पे, B इक्वल्स टू 13 यहाँ पे, B इक्वल्स टू 11 यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता. जिसका मतलब है एक B ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट इज A इक्वल्स टू 9, B इक्वल्स टू 13 and C इक्वल्स टू 11 here. So this will be satisfying the whole equation here. Now moving ahead with another question, and that is the question number 82th question of the session. In the following questions, numbers have been arranged according to the same general pattern here, and find out the missing number in each of the cases. You have to find it out. Now moving ahead with the question here. The pattern is 310, 296, 81, and this is a question mark. This is 215 and this is a 14 here. According to the particular question, we have to assume the pattern here. We can just go ahead कि 310 को A let कर लिया और इसको B let कर लिया, इसको C let कर लिया, 81 को, and then this is your D and this is E and this is F here. According to the question, the option we have is 9, 18 and 7 here. With respect to the from question, अगर मैं बात करती हूँ from the equation here, so अगर with respect to that we can see that C equals to D square
b equals to f square, or a equals to b minus c, and then a equals to b plus f. What we will get here as in the sequence, this is the 7 here. So the options with respect to that कि अगर मैं बात करती हूँ, so the following pattern will be what that will be the C here, and that will be the 9. So where we can see that this is the square of 9, and that is the option A will be the right answer. For the missing number, we'll do the under root of 81, so we'll just write it down, under root 81, and that is equals to 9. So for that missing number will be from the equation 1 what we are finding out here, c equals to d square, that is your c equals to d square. d जो है वो आपका c equals to d square है, तो d आपको पता नहीं है, that is under root squaring की दोनों साइड पे, तो फिर हमें मिलेगा 9. that is option A will be the right answer here for the question. Now moving ahead with another question, and that is a question number 72. This is question mark 16, 4, 48 and 8 here. Options 32, 64 and 40. From this we'll just find out the equation here, and that what we'll get here is 84, and that is 8 square equals to 64, and that all will be the right answer, because 8 का square 64 होता है, and I will do the same, इसका square हम करेंगे तो we'll get the this equation, because this equation comes from the c equals to d square value only, and that one we'll find it out. So that will be the 64 will be the right answer here for the question, and that is options 32, 64 and 90, and that is option B will be the right answer here for the question. Now moving ahead with another question. This was the patterns question, so you'll just have to very careful, and we have to just very clear about the concepts here. 85 का है, this is a question mark 225, 144, 12, 81 and 15. According to the pattern, the options we have 360, 75 and 240. With respect to the equation, when we are using the equation, that is your 225, और हम अगर 225 में add करते हैं that is 15, तो हमें क्या मिलता है, that will get 240 here. तो 225 में अगर हमने 15 ऐड किया है, so we'll get your answer 240 here, and that answer will be the 240, and that is option 360, 75 and 240, and that is option C will be the right answer, that is 240 here. Now moving ahead with another question, that is a question number 86th question of the session. The pattern we have 132, 121, 49, 7, then question mark, and then 11. Option is 72, 19 and 18 here. With regard of the question here, if I'm talking about, so we'll just go ahead with the question, and that is हमने इस वाले में जो equation solve की यूज़ की है वो है a equals to b plus f here, यहाँ पे हमने वो किया है. Okay, एंड दैट इज अगर ये A है तो ये B है, और ये C है, ये D है, ये E है, और ये F है, तो उस वाली इक्वेशन हमें सॉल्व की यहाँ पे यूज़ किया है. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन के बारे में कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू B माइनस C. तो यहाँ पे A ये है, B ये है, एंड C ये है, D ये है, E ये है, एंड F ये है. तो हमें E निकालना है, तो E के लिए E इक्वल्स टू B माइनस C करेंगे, तो B हमारे पास है 121 और C जो है वो 49 है. तो 121 में अगर हम 49 माइनस करेंगे, so what we'll get, we will get 72 here, and that the answer would be the 72. So the value we have 72, 19 and 18, and that is option A will be the right answer, that is 72 here for the sake of this question. Now moving ahead with another question, and that is a question number 87th question of the session here. 87th question of the session, we have, in each of the following questions the number have been arranged according to the pattern shown in the samples figures given below. Find the missing number. We have is 104, 85, 13, 8, 85 and 64. This is the sample figure here. With regard of this question, we'll go ahead with the 154, 221, this is a question marks, 14, 22, 21 and 196. Option is 11, 13 and 15 here. The pattern followed in the sample will be कि हम 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, एंड दैट विल गेट 104 यहाँ पे मिल रहा है, और अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो विल गेट 64 हियर, एंड अगर हम 8 में 13 प्लस करते हैं तो विल गेट 85 हियर. I just write it down for the sample here. 8 को अगर हम 13 में मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट 104, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे विल गेट 64, एंड अगर हम 8 में 13 प्लस करते हैं वी विल गेट योर 8 में 13 प्लस करेंगे प्लस हम 64 भी करेंगे, तब हमें मिलेगा व्हाट विल गेट इज 83, सॉरी 85, जो कि यहाँ पे मिड है. ठीक है, तो अभी इसी पैटर्न में हमें इसको सॉल्व करना है 154, 154, 14, 22, 21 एंड 196 के लिए. तो लेट द मिसिंग नंबर, अब इस नंबर को हम एक्स लेट कर लेंगे. क्लियरली विल डू दैट. 14 प्लस
x 14 में हम x प्लस करेंगे प्लस हम 196 करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट इज इक्वल्स टू 221 जो कि हमें यहाँ पे ये मिलेगा। उसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दैट इज x इक्वल्स टू 221 माइनस 210 विल गेट 11। तो x की वैल्यू जो है वो हमें 11 मिलेगी एंड दैट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे x की वैल्यू 11 आएगी, x इक्वल्स टू 11। द ऑप्शंस इज 11 13 एंड 15। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दैट इज 11 here. Now follow if you are seeing the following figures here, 89th question, 315, 261, 21, 15, and this we have to find it out. With respect to that, the missing number would be the 15 का square and that is equals to 225, क्योंकि ये नंबर निकालने के लिए हमने 8 का स्क्वायर किया था तब हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर हम सिर्फ 15 का स्क्वायर करेंगे 225 तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो 225 होना चाहिए। Okay, so the option is 125, 225 and 90 and that is option B will be the right answer, that is 225 here. Moving ahead with the 90th question of the session, and the question we have is question mark 39 and 27, 3, 39 and 39 here, 33, 42 and 81. According to the particular question अगर हम बात करते हैं तो 3 में हम 27 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं so what will get the above answer and that is 3 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे will get 81। जिन बच्चों के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट होता है मैं उनके लिए करके दिखा देती हूँ। 3 7 से 21 होता है, 1 या 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 दैट इज 8, तो 81 हमें यहाँ पे मिलेगा आंसर एंड दैट इज 81 here। 33 42 and 81 that is option C will be the right answer, that is 81 here as an answer। Moving ahead with another question and that is your question number 91th question of the session here is, here we have 91th question as you can see that is study each of the following tables and choose the alternative as it was given here। So with the alternative which can be with the following table you have to choose that alternative which can be best replace the sign of the interrogation that is mentioned here, and that what missing term will be here, and that is asked in the railway examination paper, and that is also an important paper in respect to the competition wise if I'm talking about। So here this is a table that is 3 8 10 2 and this is interrogation mark A1 6 56 90 220 and 0, this has been asked in the question। Options is 5 3 and 0। With respect to the question here we'll just go ahead or with respect to the pattern what they had followed here, that the same pattern we will used here and then we'll find it out कि कौन सा आंसर आपका जो है वो आपका सही होगा in regard of the question here। So here we have a sequence here, the pattern we have is, suppose this x denotes that the number in the first row and that is y denotes in the number of the second row here with respect to that. So here we will see the pattern that it follows is your x square minus x that is equals to y. So with respect to that pattern only 3 square minus 3 that is equals to 9 minus 3 that is equals to 6 here, and for the sake of 8 square minus 8 that is equals to 64 and then 64 minus 8 that will get 56 here, okay, according to the pattern। And then we will get the another one that is of 10 square की अगर हम बात करते हैं तो 10 का स्क्वायर जो है and that is your minus 10 that is 10 इसका square 100 minus 10 that will get here as your 90 and that you can see here। फिर 2 के बारे में बात करते हैं, so we'll get the 2 का square minus 2 and that is your 4 minus 2 and that will get 2 here, that will be the right answer। And then after that for the sake we'll have to do this, इसके बारे में इसको भी check कर लेते हैं एक बार, and that is your 1 का square minus 1 that is equals to 1 minus 1 that is equals to 0 will get the same। तो इसका मतलब है हम यार सेम पैटर्न चला रहे हैं और सेम पैटर्न ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू वाई हमें मिल रहा है। 3 का स्क्वायर किया यहाँ पे और माइनस 3 कर दिया तो हमें 6 9 में 3 गया दैट इज माइनस 6 मिला हमें। 8 के केस में भी 8 का स्क्वायर किया दैट इज 64 माइनस 8 तो 56 हमें मिल गया। 10 के केस में भी 10 का स्क्वायर माइनस 10
10 तो हमें मिला 19, 10 100 minus 10 that is 19, 2 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 minus 2 and that is equals to 2, 1 का स्क्वायर minus 1 that is equals to 1 minus 1 that is equals to 0. अब इसके केस में हम यहाँ पे करेंगे तो we'll do the same here for that sake, and that is your 5 का स्क्वायर minus 5 and 5 का स्क्वायर minus 5 that is 5 का स्क्वायर is 25 minus 5 that is equals to 20. तो यहाँ पे जो हमें टर्म मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पे 20 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो 5 होगा. Options we have 5, 3 and 0 and that is option A will be the right answer, that is 5 for the sake. Now moving ahead with another question, and that is your question number 92th question of the session, and the matrix we have been given here 1 2 3 2 0 10 12 2 5 12 10 16 13 1 2 1, this is the missing term, and 10 and 24. This question has been asked in the railway examination paper, and that is also an important paper among the competition wise. If I'm talking about, the option we have is 11, 13 and 5 here. With respect to that question, we'll do that the sum of the numbers in the first and the second and the third column की अगर हम बात करते हैं, okay, with regard that we are obtaining these, that form the series of 4, 9 and 16 here. ओके एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट आप कह सकते हो कि 2 का स्क्वायर बना रहे हैं, लाइक वी कैन से दैट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर हियर. द लेट द मिसिंग नंबर वुड बी द x here, so we'll get 2 plus 10, and then we'll get 2 plus 10 and then plus x, and that is equals to 25. So we'll get the answer x equals to, and then we'll move further here, and that is x equals to 25 minus 12, 10 plus 2 12 हो गया, x equals to 13. तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 13 मिलेगा, इसकी वैल्यू 13 आनी चाहिए. 11, 13 and 5, that is option B will be the right answer, that is 13 here. Moving ahead, the 19th and 93rd question of the session, we have the find the value of x in the following figure. आपको x की value find out करना है इस following figure में, and that figure we have here is, the figure we have is 15, 33, 27, 36, 32, 18, 22, 12, and this is x, and we have 4, 2, 2, 8 and x, and this we have to find out 9, 11 and 3. The options we have 3, 4 and 8 here. According to the particular question, the top from the left hand side, the number is obtained by adding the bottom of the two number, and the top of the right hand side, that is the result of the dividing the bottom by the two number. So what the sequence we will be having here is your that we'll do here, and what that says 12 plus 3, that is equals to 15 here. Okay, so we'll do the same here, and then we get your 12 में हम 3 plus divide करेंगे, so we'll get here as a 4, that will get here. ओके उसके बाद फिर हमने 12 में हमने ऐड किया 11, तो विल गेट 33 एज यू कैन सी, एंड फिर उसके बाद हमने सेम 22 में अगर हम डिवाइड करेंगे 11 तो विल गेट 2 हियर. ओके, सो नेक्स्ट विल डू द सेम, और दैट इज 18 में अगर हम प्लस करेंगे 9 तो विल गेट 27. 18 में अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से तो विल गेट 2 हियर. फिर 32 में अगर हम डिवाइड करते हैं सॉरी प्लस करते हैं x, विल गेट 36. तो 36 आना चाहिए 32 में ऐसा हम ऐड करने के बाद. तो 36 कैसे आएगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम बात करते हैं तो 32 प्लस एक्स जो होगा वो 8 होगा. 32 को अगर हम डिवाइड करते हैं x से तो हमें मिलेगा क्या, दैट विल बी विल गेटिंग 8 हियर. ओके, तो हमें उसके सीक्वेंस के पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करते हैं द सीक्वेंस विल रिसीव इज, तो अगर हम इसके रिक्वेंस की बात करते हैं तो x इक्वल्स टू हमें 4 रिसीव होगा, एंड दैट विल बी द राइट आंसर एज वेल. अगर हम x इक्वल्स टू पुट भी करते हैं तो x यहाँ पे 36 में 32 जाएगा, 36 में 32 गया तो 4 मिलेगा. इस इक्वेशन के हिसाब से सोल्व करो तो यहाँ पे अगर x है तो x इक्वल्स टू 36 माइनस 32, देन विल गेट 4 हियर एज आंसर. इसके हिसाब से भी बात करोगे अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देन विल गेट द वैल्यू एज वेल. द 3, 4 and 8, and that is option B will be the right answer, that is 4 here as answer here. Now moving ahead, we had completed the inserting the missing character, that is the 15th topic of the session. We'll discuss in the next coming class, we'll discuss the data sufficiency as well as you know with
respect to the reasoning class अगर हम बात करते हैं तो we had completed most of the topics and as I told you कि reasoning दो parts में divided है, आपका verbal reasoning and non verbal reasoning में, and verbal reasoning भी जो आपका है वो दो section में divided कर दिया गया है, जो कि general mental ability और logic reasoning आता है। जनरल मेंटल एबिलिटी में हम 15 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज कॉम्पिटिशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, पजल टेस्ट है, सीक्वेंशियल आउटपुट रेसिंग है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, अल्फाबेट टेस्ट है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, अरिथमेटिक रीजनिंग है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है, डेटा सफिशिएंसी है, डिसीजन मेकिंग है, असर्शंस एंड रिएक्शंस है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट है। उसके बाद सेक्शन 2 जो कि लॉजिक रीजनिंग आपका है, लॉजिक स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेजेस, थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट, miscellaneous logical puzzles that we have to discuss here in the class. Next, with ahead non-verbal reasoning की बात करते हैं तो we'll have series, analogy, classification, analytical reasoning, mirror image, water image, embedded figure, completions of incomplete pattern figure, matrix, paper folding, paper cutting, rule detection, grouping of identical figures and the cubes and dice, dot situation, constructions of squares and triangles, figure formations and analysis, and practice question paper that we'll discuss for your practice, for your sake. Okay, so first of all, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। क्लास, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. Thank you.